unexpected landscapes which range from golden beaches to wonderful rainforests and rolling tea plantations. The biodiversity of the country is equally impressive, home to thousands of species of wildlife and flora. Culturally, it is a vibrant mosaic of ethnicities, religions and traditions. Sri Lanka is a home for Sinhalese, Tamils, Muslims, Burghers, Malays and indigenous Vata communities. This multiculturalism is reflected in the country's festivals, cuisines, music and dance. The country's cuisine is another highlight, renowned for its bold flavors and aromatic spices, from delicious curries to street food delights like hoppers and kothoroti. The culinary diversity reflects the island's historical trade links and cultural exchanges, so that iconic, most beautiful island is none other than... No, Sharaf, it's not just an island, it is the paradise on the earth, Sri Lanka! Assalamu alaikum and a very warm good evening to all of you. I'm sure that you people are in the best of your spirits because today we are here just to welcome you on the behalf of Sri Lankan High Commission in Islamabad, Consulate General of Sri Lanka in Karachi, and definitely on the behalf of Alhambra Arts Council, Lahore. Ladies and gentlemen, I'm Riaz Khan. And it's really my honor just to say thank you very much for being part of today's evening. Moses Karadin Wazar, मेरा नाम रियाज खान है और आप सबको श्रीलंकन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ श्रीलंका कराची और अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उनकी टीम की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहना है, इस यकीन के साथ कि आज की ये शाम आपको बहुत देर तक याद रहेगी। खवातीन साहब, Ladies and gentlemen, Executive Director of Alhambra Arts Council, Ma'am Sarah Rashid is here, and definitely all the distinguished guests are here, all the excellencies are here. Ladies and gentlemen, you are also very important, and just to begin this special event, let us raise ourselves for the national anthem of Pakistan and Sri Lanka. Moses Karadin साहब, आज की शाम का आगाज करने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले कौमी तराने से आज की शाम का आगाज करें। पहले पाकिस्तान का कौमी तराना आप सुनेंगे और उसके बाद आप श्रीलंका का कौमी तराना सुनेंगे। आप सब पर लाजिम है कि आप इसके एहतराम में खड़े हो जाएंगे। Good evening, the worthy High Commissioner of Sri Lanka. I'm so glad to welcome the troop of our brother nation. और आप सबको खुशामदीद जो इन दो ममालिक की दोस्ती का आज जो सबूत है उसके गवाह बनने के लिए आए हैं। आई होप आप एंजॉय करें और ऐसे ही श्रीलंकन कंट्री के साथ हम कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम पाकिस्तान की और लाहौर की यूथ के लिए पेश करते रहेंगे। एंजॉय, थैंक यू। Swasti Mansha Varga Chakku